I believed I changed. I believed and made change happen. मैं बदलाव लाकर रहूँगा। My Change.org petition gave voice to many like me who were against political rallies and roadshows amid the third wave of the COVID-19 pandemic. Election Commission paid heed to each of us and banned them right in time. I believe in change and am happy that my petition played a role in PM announcing booster dose for senior citizens and frontline warriors. 25 जनवरी 2022 को हिमाचल दिवस के दिन घोषणा की कि जो एकल महिलाओं की मांग थी उसको हमने इंक्रेज किया, 35,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। तो मैं अपनी ओर से तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का व प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। After months of campaigning, the proposal for setting up a state women's university has been given green signal by Telangana cabinet. Shankar the elephant has suffered enough, and because of our petition, I'm confident that he will be rehabilitated and soon find a happier home. I'm proud to say that our petition has not just garnered media interest in India, but also internationally. Even actors and influencers are now supporting his cause. अनाथ होने के कारण ही मुझे मेरा भारतीय पासपोर्ट बनवाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी Change.org petition की मदद से मेरी कहानी मीडिया तक पहुंची है और मेरा पासपोर्ट एप्लीकेशन भी आगे बढ़ रहा है।